Today we are going to discuss the cytoplasmic organelle, that is the lysosome. Lysosome is the combination of two Greek words. One is the lyso, that is from the lysis, and the soma is from the body, as it is mainly responsible for the lysis of different types of component of the cell or the foreign body. That's why it is called the lysosome. It is also called the suicide bag because it mainly involved in the hydrolysis or in the lysis of the foreign body, or sometime in the cell organelles as well, or the damaged organelles are in the cell autophagy. It is a membrane-bound organelle. Lysosomes are found in all eukaryotic cells except some fungi like yeast, neurospora, protists like the euglena, meristem cells, and mature mammalian RBCs lack the lysosomes. Lysosomes are spherical vesicles that contain hydrolytic enzymes that can break down many kinds of biomolecules. Hydrolytic enzymes mainly involved in the breakdown of biomolecules. These are the most important constituent of the lysosome. The lysosome also acts as the waste disposal system of the cell by digesting unwanted material in the cytoplasm, both from outside of the cell or inside the cell. सेल में जो बाहर से जितने जो वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं या जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स आ रहे हैं उस सेल के अंदर जो इनसाइड द सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं टॉक्सिक कंपोनेंट्स, वो सारे जो टॉक्सिक या अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको सेल लाइसोसोम उनसे गेटेड करता है, उनको डाइजेस्ट करता है और सेल को मतलब खतरात से बचाता है लाइसोसोम. Material from outside the cell is taken up through endocytosis, while material from the inside of the cell is digested through autophagy. जो endocytosis से सेल के बाहर से मटेरियल एंटर होगा और that will be digested or that will be removed from the cell to the process of the phagocytosis, while the material that is from the inside जो सेल के अंदर जो अंदरूनी खतरात होते हैं, जो डैमेज ऑर्गेनेल्स हैं या सेल में जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं या जो सेल में जो फ्री रेडिकल्स या और जो ऑर्गेनेल्स डैमेज होती हैं उनको सेल इटसेल्फ अगर सेल को डिटॉक्सिफाई करना तो डैमेज करना तो उसमें ऑटोफेगी का प्रोसेस इस्तेमाल होता है. Lysosomes were discovered and named by Belgian biologist Christian de Duve, who eventually received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1974. Lysosomes are known to contain more than 60 different enzymes. There are 60 different enzymes that are found in the lysosome. These enzymes are responsible for the degradation, for the detoxification of different types of molecules. Enzymes of the lysosome are synthesized in rough endoplasmic reticulum. जो lysosome के enzymes हैं rough endoplasmic reticulum में synthesize होंगे, then they will transport it to the Golgi apparatus और vesicle की form में वहाँ से release out हो जाएंगे. The enzymes are imported from the Golgi apparatus in small vesicles which fuse with the large acidic vesicles. Enzymes destined for a lysosome are specifically tagged with the molecule mannose 6-phosphate. Mannose 6-phosphate उन enzyme के साथ tag होता है that will responsible for the formation of the lysosome, so that they are properly sorted into the acidified vesicles. Lysosomes are more in numbers in cells involved in the intracellular digestion like phagocytic cells and osteoclast cell. Lysosome की तादाद उन सेल में ज़्यादा होती है जो phagocytosis में mainly helpful होते हैं या they are mainly responsible in the degradation या digestion में. Phagocytic cells involved in the process of phagocytosis, macrophages हैं, neutrophils हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स में चूंकि वहाँ भी डाइजेशन का अमल ज़्यादा होता है इसलिए लाइसोसोम का नंबर फेगोसिटिक सेल्स में और ऑस्टियोक्लास्ट सेल में ज़्यादा होगा. Synthesis of lysosomal enzyme is controlled by nucleogenes. Mutation in the gene for these enzymes are responsible for more than 30 different human genetic disorders, which are collectively known as lysosomal storage diseases. अगर lysosomal एंजाइम में कोई डैमेज कोई म्यूटेशन आ गया तो इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स. इस तरह 30 डिसऑर्डर्स हैं और इन डिसऑर्डर्स को हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं. दीज डिजीजेस रिजल्ट्स from an accumulation of specific substrates due to the inability to break down them. क्योंकि 60 different enzymes हैं और 60 different enzymes responsible हैं for different types of
द डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अगर किसी एक एंजाइम में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, किसी एक एंजाइम में कोई म्यूटेशन आएगी, तो वो स्पेसिफिक मालिक्यूल डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, देन दैट मालिक्यूल विल स्टार्ट एक्यूमुलेशन। जब एक्यूमुलेशन होगी उस मालिक्यूल की, तो वो स्टोरेज डिजीज की तरफ लीड करेगा। तो मेनली इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। These genetic defects are related to several neurodegenerative disorders, ब्रेन रिलेटेड, नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, कैंसर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि एक्यूमुलेशन होगी, सेल का जो मेटाबॉलिज्म वो ओवर एक्ट होगा, सेल की डिवीजन ओवर एक्ट हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड एजिंग रिलेटेड डिजीजेस आर due to the lysosomal storage diseases are the mutation in the specific gene or enzyme that is responsible for the breakdown of that specific molecule. Structure of lysosomes. The outer surface is formed by a single membrane, that is phospholipid bilayer, that can fuse with some other membrane bound organelles. Approximately a spherical shape होते हैं and diameter ranging from up to 1 micrometer. Lysosome का जो diameter 1 micrometer. A single lysosome contains many enzyme molecules. The enzymes contained within the lysosomes are known collectively as acid hydrolases and work best in acidic environment, that is low pH. तो एंजाइम जो लाइसोसोम में होते हैं वो लो पीएच में काम करते हैं, क्योंकि सेल की जो अपनी पीएच होती है वो अल्कलाइन पीएच होती है। दैट्स वाई जो सेल के कंटेंट्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते lysosomal enzyme से। The interior of the lysosome is acidic, about 4.5 to 5, compare with the slightly basic, that is 7.2 intracellular fluids। जो intracellular fluids होते हैं, जो सेल की अपनी pH होती है वो अल्कलाइन होती है, slightly basic होती है, which is also called cytosol, that surrounds organelles such as lysosome within the cells. Lysosome consists of two parts, limiting membrane and inner dense mass. Limiting membrane, this membrane is single, unlike that of mitochondria and composed of lipoprotein. चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, वो इसमें लिपोप्रोटीन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। द केमिकल स्ट्रक्चर इज होमोलोगस विद द यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, plasma lemma are plasma consisting of the biomolecular layer as listed by the Robertson. Inner dense membrane, inner dense mass. This enclosed mass may be solid or of very dense contents. Some lysosomes have very dense outer zone and less dense inner zone. जो outer zone होगा वो dense होगा, जो inner होगा वो less dense होगा. Some others have cavities or vacuoles within the granular material. Usually they are supposed to possess denser contents than mitochondria, and they show their polymorphic nature, and their contents vary with the stage of digestion as they help in intracellular digestion. These are different types of the lysosome based on their functions: the primary lysosome, secondary lysosome, residual body, and the autophagy vesicles. तो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, दीज लाइसोसोम आर द इनएक्टिव लाइसोसोम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनेगी जिसने लाइसोसोम को सिंथेसाइज करना है, वो एंजाइम बनेगा जिसने लाइसोसोम को सिंथेसाइज करना है, वो गाल्जी बॉडी से होते हुए इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल सिक्रेट आउट हो जाएगी। तो ये वेजिकल में इनक्लोज जो एंजाइम्स हैं, दीज फॉर्म द लाइसोसोम। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम इसको कहते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में और प्री सिंथेसिस के फौरन बाद इट इज़ नॉट एक्टिव येट, अब तक ये एक्टिव नहीं है। इसमें प्राइमरी लाइसोसोम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स हैं वो जो स्ट्रक्चर इनएक्टिव फॉर्म में है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम कब होती है? जब कोई भी आने वाला मटेरियल बाहर से, पिनोसाइटोसिस हो या फेगोसाइटोसिस हो। पिनोसाइटोसिस मेनली इन्वॉल्व इन द फ्लूइड ड्रॉपलेट्स एंड व्हाइल द फेगोसाइटोसिस द इन्वॉल्वमेंट और एनगल्फमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। तो कोई भी मॉलिक्यूल जब एंटर होगा सेल में, तो पिनोसाइटोसिटिक पाथवे वो कोई फ्लूइड होगा या कोई फूड वैक्यूल होगा, सॉलिड पार्टिकल होगा। जब वो कंबाइन होगा, जब वो फेगोसोम के प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब बाइंड होगा, देन इट विल फॉर्म द सेकेंडरी लाइसोसोम। इट इज नाउ द एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में इसमें हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें ब्रेक डाउन होगी जो फॉरेन पार्टिकल है उसकी, और आफ्टर दैट जो एंड मटेरियल है वो रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस से रिलीज आउट हो जाएंगे। ऑटोफेगी या ऑटोफेगिक जो वेसिकल्स होते हैं, दीज आर मेनली इन्वॉल्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द सेल
ऑर्गेनेलिस, सेल की अपनी ऑर्गेनेलिस को डिटॉक्सिफाई करने में, उनको डिग्रेड करने में, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है ऑटोफेगिक वेसिकल। इसमें सेल्फ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होगा, एंडोप्लाज्मिक डैमेज हो गया या गोल्जी बॉडीज डैमेज हो गया, उनको डाइजेस्ट करेगा ऑटोफेगिक। जो सेल की अपनी जो एंगल्फमेंट है वो भी ऑटोफेगी वेसिकल्स करते हैं, सेल को रिसाइकिल करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हुए, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को। So there are four different types of lysosome. Primary lysosome, inactive form, after binding with the particle, it will convert into the secondary lysosome, then autophagy lysosome, and the residual body. Enzymes in the lysosomes. There are 6 different types of enzymes found in the lysosomes. Number of enzymes is 60. The type of enzyme is 6. Proteases, that are responsible for the degradation of proteins. Nucleases, responsible for the degradation of RNA and DNA. Nucleic acid, the glycosides is responsible for the digestion of the carbohydrates, estases for the digestion of the esters, and sulfatases for the sulfur-containing groups or compounds, and phosphatases for the digestion of the phosphate-containing phosphate-containing compounds. Formation of lysosome. Lysosome mainly form in the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो बड होती है इसकी फॉर्मेशन होती है फाइनल, वो जो एंजाइम्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, उसकी जो फाइनल सेंस होती है वो गोल्जी बॉडीज में बनती है। द गोल्जी apparatus which is present in the vast majority of eukaryotic cells forms tiny vesicles that separate. Some descriptions may bud from the ends of the Golgi cisternae, वो से separate off होते हैं, bud off होते हैं। Vesicles form in this way that contain enzymes such as proteases and lipases are primary lysosomes. Secondary lysosomes are formed when primary lysosome fuse with the membrane bound vesicles. जब membrane bound vesicle के साथ जब ये fuse करेंगे, then it will form the secondary lysosome, जो हम पहले discuss कर चुके हैं। The production of lysosomal proteins suggests one method of lysosome sustainment. Lysosome protein genes are transcribed in the nucleus. Messenger RNA transcript exit the nucleus into the cytosol, where they are translated by ribosomes. The nascent peptide chains are translocated into rough endoplasmic reticulum, where they are modified. जो प्राइमरी जो सेंथिस स्टार्ट होगी वो साइटोसोल में स्टार्ट होगी, वहां पे जब नेसेंट पेप्टाइड चेन बनेगा, देन इट विल ट्रांसलोकेटेड इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां पे फिर जाकर वो उसकी फाइनल सेंसेस होगी और मेनोसिस फॉस्फेट अटैच होगा, बाइंड होगा, देन इट विल माइग्रेटेड और ट्रांसफर टुवर्ड्स द गोल्जी apparatus. Upon exiting the endoplasmic reticulum and entering the Golgi apparatus via the vesicular transport, a specific lysosomal tag, that is mannose 6 phosphate, is added to the peptide. तो उस पेप्टाइड के साथ mannose 6 phosphate ऐड होगा before entry into the Golgi apparatus. The presence of these tags allow for binding to mannose 6 phosphate receptors in the Golgi apparatus. ये अपनी जो फाइनल उसकी डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचाने में mannose 6 phosphate हेल्पफुल होता है. A phenomena that is crucial for a proper packaging into vesicles destined for the lysosomal system. वो प्लेस जहाँ पे लाइसोसोम ने पैक होना है, वेसिकल की फॉर्म में प्रोड्यूस होना है, उस फाइनल डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने में mannose 6 phosphate बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Upon leaving the Golgi apparatus, the lysosomal enzymes filled vesicles fuse with the layered endosome, relatively acidic organelle with approximately 6.5 pH, 5.5 pH. This acidic environment causes dissociation of the lysosomal enzyme from the mannose 6 phosphate receptors. ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है इससे mannose 6 phosphate डिसोसिएट हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपने पैकेजिंग की तरफ जा रहा है. द एंजाइम्स आर पैक्ड into vesicles for further transport to the established lysosome. The layered endosome itself can eventually grow into a mature lysosome, as evidenced by the transport of endosomal membrane component from the lysosome back to the endosome. Formation of the lysosome. Vesicle that are moved from the endoplasmic reticulum to Golgi, वो वेजिकल जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करेंगे गोल्जी बॉडीज की तरफ. गोल्जी बॉडी में उनकी प्रोसेसिंग होगी, उनकी फर्दर पैकेजिंग होगी और उसको मेम्ब्रेन में बाउंड करेंगे गोल्जी बॉडीज. देन गोल्जी बॉडी विल रिलीज दैट वेजिकल आउट फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस. जो रिसीव होते हैं वो सिस फेस से होते हैं, जो रिलीज होते हैं वो ट्रांसफेस से होते हैं. तो
लाइसोसोम भी इसी मैकेनिज्म से सिंथेसाइज होते हैं। आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स फाइनल लोकेशन। जो लाइसोसोम है वो अपनी लोकेशन की तरफ मूव करते हैं। साइटोप्लाज्म में चूंकि लाइसोसोम निरन होते हैं, अदर कंपोनेंट्स जो इस तरह प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो सेल वॉल में उन्हें मूव करने हैं तो देन सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव करने हैं तो वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करके सेल से सिक्रीट हो जाते हैं। तो lysosome की सेंसेस में बेसिक मैकेनिज्म क्या है? रिसीव फ्रॉम द एंडोरेटिकुलम, प्रोसेसिंग एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज ऑफ द गोल्गी बॉडीज। Function of the lysosome. The function of lysosome concern the different ways in which the enzymes contained within the membrane that defines and encloses the lysosome affect other material which can originate from either outside or inside the cell. तो जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ एंजाइम पे कि उसमें कौन से एंजाइम मौजूद हैं। तो मेनली देयर आर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स दैट आर फाउंड इन द लाइसोसोम्स। तो वो प्रोटीन को भी डिग्रेड करते हैं, प्रोटीज होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को भी करते हैं। तो वो टाइप ऑफ सेल पे उसका डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ सेल में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। रिलीज ऑफ एंजाइम्स आउटसाइड ऑफ द सेल, एक्सोसाइटोसिस, व्हिच may serve the purpose of destroying material around the cell. Lysosomes are responsible for autophagy. Autophagy is the self-eating of the cell. The gradual turnover of the cell's own components. Cell के अपने ही components को destroy करेगा. That is called autophagy. Auto means self and phagy means eating. Self-eating is called the autophagy. The first step of autophagy appears to be the enclosure of an organelle, that is a mitochondria in membrane derived from endoplasmic reticulum. The resulting vesicle and autophagosome then fuses with the lysosome and it contents are digested. उसको जो भी component जिसने release out होना है, जिसने digest होना है, वो lysosome के साथ बाइंड करेगा, फ्यूज होगा, दैट इज कॉल्ड द फेगोलाइसोसोम। उससे सॉरी ऑटोफेगोलाइसोसोम बनेगा। तो उससे फिर जो कंटेंट्स हैं लाइसोसोमल कंटेंट्स, एंजाइम्स जो उन कंटेंट्स को डाइजेस्ट करेंगे। Autophagy, that is the lysosomal breaking down of the damaged organelles. This is the lysosome. Lysosome fuse with the vesicle containing the damaged organelles. ये damaged organelle है, ये vesicle है जिसमें हमारी damaged organelles मौजूद हैं। इसमें peroxisome भी damage है, हमारा mitochondria भी damage है। This vesicle having the damaged organelle, when this organelle fuse with the this vesicle fuse with the lysosome, it will form the autophagosome बन जाएगा। ये ऑटोफेगोसोम बन जाएगा। ऑटोफेगोसोम बनने के फ़ौरन बाद जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस ऑर्गेनेली को कंपोनेंट्स में डाइजेस्ट कर देंगे। इस तरह जो डैमेज ऑर्गेनेलीज होती हैं वो लाइसोसोम की मदद से हाइड्रोलाइज ब्रेक डाउन होकर सेल से उनके कंटेंट्स रिलीज आउट हो जाते हैं। तो ऑटोफेगी में लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑटोफेगी इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। Lysosome is also responsible for digestion of material from outside the cell. हेट्रोफेगी बोलते हैं उसको। हेट्रोफेगी जब सेल के बाहर से कोई मटेरियल आएगा उसको जब डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोफेगी कंडीशन। आई by fusing with the vacuoles from outside the cell. This could include breaking down material taken in by phagocytes, which include many types of white blood cells, also known as the leukocytes. तो phagocytes जो WBCs हैं, जो macrophages हैं, mainly they are responsible for the lysis of the external waste, external damage, external parts। जो बाहर से कोई भी पैथोजन अटैक करता है, कोई भी हार्मफुल एजेंट अटैक करता है, उसके लिए मैक्रोफेजेस रेडी होते हैं। तो मैक्रोफेजेस में चूंकि लाइसोसोम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर से आने वाला जो मॉलिक्यूल है उसको कौन ट्रैप करेगा? लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम बनेगा, देन इट विल डाइजेस्ट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स और उससे सेल गेट rid कर लेगा। स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोफेगी में बी फेगोसिटिक, बाय विच सेल engulf extracellular debris, bacteria or other particles only occurs in certain specialized cells. Pinocytic, by which cells engulf extracellular fluid। जब fluid होगा तो pinocytic, जब solid particle होगा ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई solid debris भी हो सकती है, that is called the phagocytic। and endocytic, by which cells take up particles such as molecule that have become attached to the outer surface of the cell membrane। तो जो surface से attach होकर जो material enter होगा cell में, that is called the endocytic। In phagocytosis is the breakdown of the foreign material। phagocytosis वो प्रोसेस है जिसमें फॉरेन मटेरियल ब्रेक डाउन होता है। फेगो दैट इज द ईटिंग एंड साइटोसिस इज द सेल
ओसिस is a process, सेल ईटिंग प्रोसेस कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। तो मेनली इसमें जो भी बाहर से आने वाले मटेरियल होते हैं सेल का जो लाइसोसोम है उसको डाइजेस्ट कर देता है। और जो फूड मटेरियल है यूजफुल पर्पस के लिए मेनली अमीबा में इस तरह होता है कि वो जो फूड मटेरियल को इंजेस्ट या एंडोसाइटोसिस पाथवे के बाद एंडोसाइटोसिस के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम। तो जो WBCs में या मैक्रोफेज में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं फेगोसोम। दोनों प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। इन फेगोसाइटोसिस स्पेशलाइज्ड सेल्स like the macrophages take up and degrade large particles including bacteria, cell debris and edge cell that need to be eliminated from the body। उन जिन सब्सटेंस में बॉडी से निकलने होते हैं उनके साथ जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं वो उनको अटैक करते हैं। आफ्टर दैट सच लार्ज पार्टिकल्स आर टेकन अप इन फेगोसाइटिक वैक्यूल्स दैट इज कॉल्ड द फेगोसोम व्हिच देन फ्यूज विद लाइसोसोम रिजल्टिंग इन द डाइजेशन ऑफ देयर कंटेंट्स। The lysosome form in this way phagolysosome बनेंगे can be quite large and heterogeneous since their size and shape is determined the content of material that is being digested। चूँकि साइज बहुत ज़्यादा होता है उनमें फूड को डाइजेस्ट करना होता है। द product that is produced or the structure that is obtained after the fusion of the lysosome with the foreign particle that is called phagolysosome। दिस प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा फूड मटेरियल हुआ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए एंडोसाइटिक पाथवे से एंटर होंगे फूड वैक्यूल है। This is a lysosome having the digestive enzyme hydrolytic enzymes containing the hydrolytic enzyme digestive enzymes हैं जो डाइजेस्ट करेंगे इस फूड मटेरियल को। जब लाइसोसोम और फूड वैक्यूल या बाहर से आने कोई भी जो कंपोनेंट हैं वो फ्यूज करेंगे it will form the phagolysosome। Lysosome fuse with the food vacuole and form the phagolysosome। After that hydrolytic enzyme digests food particle into its units into its basic components and the cell will obtain the energy if it is responsible for the food। ये फूड वैक्यूल है तो फूड मिलेगा। अगर ये कोई बैक्टीरिया हुआ तो बैक्टीरिया को ये पीसेस में कन्वर्ट करके सेल से रिलीज आउट कर देगा। Lysosome also responsible for the recycle the products of biochemical reactions that have taken place inside the cells। A human liver cell, for example, recycles half of its macromolecules each week। लिवर सेल्स हैं उसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो रिसाइकल होते हैं बाय यूजिंग दिस लाइसोसोम। डिफरेंट मटेरियल्स लाइक केमिकल्स आर प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज। For example, some structures may be processed degraded within lysosome and others are taken to the surface of the cells। तो कुछ लाइसोसोम डिग्रेड करते हैं कुछ सरफेस में डिग्रेड हो जाते हैं। लाइसोसोम आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्सिनोजेंस। Some human diseases that are called lysosomal storage diseases are due to lysosomal enzyme disorders। अगर lysosome किसी भी एंजाइम में कोई डिसऑर्डर आ गया तो it will lead towards the lysosomal storage disease। Tay-Sachs disease, for example, a lipid digesting enzyme is missing or inactive। जब lipid digesting enzyme inactive होगा missing होगा then it will lead towards the Tay-Sachs disease। And the brain becomes impaired by an accumulation of the lipids in the cells। इसमें brain में जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगे जो डिजेनरेशन होगी नर्व सेल्स की। फॉर्चुनेटली lysosomal storage diseases are rare in the general population। तो जनरल पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो कम है एज कम्पेयर टू द अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। That's all about the lysosome। Lysosome is also called the suicide bag that is responsible for the digestion of different types of components inside the cell। It may be the autophagy, it may be the that is the digestion of the self components of the cell, or it may be the heterophagy that is the digestion of the components that are फॉरेन एजेंट्स तो उनको भी लाइसोसोम डिग्रेड करेंगे। लाइसोसोम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं दैट आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन। लाइसोसोम में कोई मसला होगा कोई प्रॉब्लम होगा कोई म्यूटेशन होगी लाइसोसोम के एंजाइम में देन इट विल लीड टुवर्ड्स द स्टोरेज डिजीज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। थैंक यू सो मच।